Shall I? Yes. Again, I apologize for the delay. As goes the tradition, we begin this event by invoking the presence of the Almighty. COVID-19 has placed us all on a virtual mode, and we pray to God, our Savior, to deliver us from these difficult times and lead us to peace and positivity. जी हाँ, कोविड-19 जैसे महामारी ने ईश्वर पर हमारा विश्वास और भी दृढ़ कर दिया है। हमने कल से सीखा है, आज हम जी रहे हैं और कल के लिए उम्मीद रखते हैं। हमें बिना हिम्मत हारे आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारा ईश्वर, हमारा खुदा हमारे साथ है। मुश्किलें बड़ी मुश्किलों से कह दो मेरा, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरगिज़ हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। May I now invite our respected principal, Dr. Sister Jyoti, who is an inspiration
behind this Sister Priscilla Memorial Lecture. It was she who initiated this lecture. Sister Jyoti is also from the Department of Geography, and I deem it my privilege to invite her to introduce this lecture and bless us. Thank you, Dr.Debjani. Respected Secretary GB, Sister Shushma, respected Vice Principal, Sister Shobha, respected HOD Department of Geography, Dr. Debjani Roy, and the Department of Geography, the entire colleagues, all faculty members of various departments who are connected with online and offline. Esteemed resource person of the day, Dr. Taruna Bansal, and all my dear students. A very good morning to you all. This is indeed another graceful day, God-given day with all possibilities. I am proud to announce that you have already set this day to honor our former principal and the faculty member of Department of Geography, Dr. Sister Priscilla, who is no more with us. And I also feel glad to witness this Sister Priscilla Memorial Lecture today on 13th September 2021. I feel it is my privilege to speak a few words about her. She was certainly a renowned professor, yes, the principal, who dedicated herself for the development of this institution. Her commitment and dedication, and moreover, her contribution is remarkable in building up this institution. Thereafter, we follow up the rest of the building up careers and the carrying out the task which she has began. I am happy to say that all that she has done to the institution is remembered today. May she enjoy eternal bliss as she is no more with us. For Department of Geography, I feel proud that you have taken this initiative and you are still maintaining or carrying out to give honor to such personality. And I say this is an honor to the institution as well. It shows your greatness and your great heart that is open with one heart, one mind. I feel to give honor to such academician is also an occasion to enhance the academic endeavor for the students, for the faculty, and the entire academicians, the entire learning community. I feel this is certainly an occasion to acknowledge your greatness that you organize such academic endeavor for knowledge sharing by calling reputed personalities or renowned personalities time to time. Yes,
It shows your quest of learning and giving the best for the student community or the education that you want to impart is always looking for excellence. I feel that is the need of the time. I congratulate on this day for organizing this academic endeavor, academic interaction with such a renowned person, and the students witnessing it, and her interaction with the teachers and students will certainly enhance our students in their search of their knowledge. Knowledge is power, as we know, and we need to empower our students by organizing various activities. This is one among them. We take this opportunity as online mode. Yes, we are unable to see you, dear students. We are unable to be with you, but we are journeying along with you in all that you are going through and you are journeying towards your search of knowledge, towards your commitment to the search of career. We are with you. That is what I want to say. By giving all these opportunities for you, it is only for you, and we are with you even in this adverse situation. And I take this opportunity to wholehearted congratulate Department of Geography, the leader, the dynamic leader, Dr.Debjani Roy, along with her team. May God bless you. My blessings are with you. My best wishes are with you. And my prayers are with you. May God bless you all. Have a pleasant time. Have a good day. Thank you. Thank you, sister, for your gracious words. We are indeed privileged to have you as a leader to lead us. May I now invite Dr. Parveen Zehra to introduce the resource person. Thank you, ma'am. Good morning, all of you. As the sun rays announces a new day, I heartily welcome the gathering to this beautiful morning. I tender my humble regards to our chief patron, respected principal, Dr. Sister Jyoti, Sister Superior, Reverend Sister Shushma Bek, Vice Principal, Sister Shobha, and our distinguished resource person, Professor Taruna Bansal. I welcome you for the second online Sister Priscilla Memorial Lecture 2021. Let me introduce our resource person, Professor Taruna Bansal. She is an associate professor at the Department of Geography, Jamia Milia Islamia, New Delhi, an alumnus from Jawaharlal Nehru University. She completed her doctoral studies from the Center for the Study of Regional Development, JNU. She joined the Department of Geography, Faculty of Natural Sciences, Jamia Milia Islamia, New Delhi, as a lecturer in 2006 and has been with it ever since in the capacity of assistant professor and associate professor. She has a diverse work experience spanning urban studies, regional development, social and cultural geography. Her research interests are in the areas of urban geography, social cultural geography, and gender geography. She is particularly interested in urban ecology, historical geography, ethnomusicology, geographies of tourism, and conceptual traditions in cartography. Ma'am,
As you are one of the known speaker on the topic, your deliberation and participation will surely benefit the participant. Let us welcome Professor Taruna Bansal ma'am, please. Good morning, everyone. I'm sure you're able to hear me. Yes, Taruna, we can hear you. Please continue. So, yeah, so Dr. Debjani, should I start? Yes, sure. Right. First of all, thank you everyone, especially Sister Jyoti and Dr. Debjani for giving me this opportunity to interact with you. What I've tried to do today is, because I know most of the students here are undergraduate and postgraduate students, I'm just trying to share my knowledge, what I have learned in the last 25 years of urban geography, or rather what urbanization is in India, right? So that is what I would be discussing today. And if anybody has any questions, any queries, I would like to take that at the end of my lecture. So I'll just share my screen so that Dr. Debjani, I have been disabled. Yeah, we are enabling you. Okay, no issues. Ma'am, you may now share your screen. Yeah, I hope my screen is visible to all of you. Absolutely, ma'am. Right. Yeah. So as Dr. Debjani told me, yeah. So as Dr. Debjani told me, I just wanted to discuss, something related to what I say is my specialization, that is urbanization or urban geography. So today I would be discussing the tale of Indian metropolization, breaking myths of Western urbanization. Now, as you can see these two photographs, in the front of my PPT, you can see that these are two very different photographs. One is showing tall buildings, a beautiful road, which is, like maybe a highway. And at the same time, we have these shanty houses, which we usually call as slums. So this is what all is about Indian metropolises. So how do I start? What I'm trying to do today, yeah. So I'll discuss what do I mean by urbanization, what is the definition of urban areas, process of urbanization, how we have fared in this process of urbanization, and what is the process of metropolization in India, and how does it break the Western myths. Now, again, here, the best part which I like when I talk about urbanization is that, when we are sitting at one particular place, we can only visualize, we can only think, okay, this city, ये city ऐसा दिख रही है, ये city ऐसी दिख रही है, या अच्छा मुंबई मैं भी नहीं गई, but मुंबई शायद ऐसा दिखता है. तो शायद इंटरनेट टेक्नोलॉजी ने जो हमें दिया है, जो सबसे बड़ा वरदान टेक्नोलॉजी ने हमें दिया है, वो यही है कि हम अपने एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के साथ, एक अच्छे लैपटॉप, फोन, जो भी डिवाइस हमारे साथ है, हम दुनिया देख सकते हैं. और यही मैंने अपनी इस पीपीटी में भी कोशिश की है कि हम सब अलग अलग जगह बैठे हुए हैं, बट हम ये फील कर सकें कि हमारा देश इंडिया इस पूरी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन को किस तरीके से ले रहा है, और क्या ये सही डायरेक्शन है, और क्या हमें वेस्टर्न अर्बनाइजेशन मॉडल को फॉलो करना चाहिए, और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे, और क्यों नहीं कर पा रहे हैं. दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू डिस्कस टुडे. सो urbanization as a process. Now, it is a field, urban studies, which has been, studied by all the social scientists. Or jaisa Dr. Zehra ne kaha, I am a JNUite. I have I've done my MA, MPhil and PhD from JNU. Although I'm working in Faculty of Natural Sciences, I call myself a social scientist. The reason is society is my lab. हम जो भी पढ़ रहे हैं, हम अगर मैं आज आपसे अर्बन ज्योग्राफी के बारे में या अर्बनाइजेशन या किसी भी सिटी के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, तो वो सिटी मेरे लिए लैब बन जाती है. मैं सिटी को लैब में नहीं आ सकती, बट लैब मेरी जो है वो सिटी बन जाती है, और मैं सोसाइटी को पढ़ रही हूँ. आप लोगों का अपना क्या कहते हैं, मतलब व्हाट इज योर परसेप्शन एंड व्हाट इज माय परसेप्शन. So that can only come when I interact with the society, with the people. So I always start when I say this, anything with urbanization, I am actually a fan of Louis Wirth's this particular sentence, urbanism as a way of life. Now, why do I say that? Because, when we study urbanization, there are three interpretations. Not just that, a city has come up because of industrialization, or, people move to a particular urban settlement. No.
Urbanization is the result of a process which has three connotations. One is behavioral, the other is structural, and the third is demographic. And I'll discuss that. And then when I say urbanism as a way of life, it is because all of you are staying in, I believe, in Ranchi, and you must have migrated to Ranchi from some nearby hinterland of Ranchi. Similarly, when I am in Jamia, most of my students, are from all India, especially eastern part of India, and some from even southern part of India. But Delhi के जो particular students है वो बहुत कम हैं. तो मतलब क्या है कि urban areas ऐसी जगह है, ऐसी cities एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग पुल होकर आ रहे हैं. बट वो पुल का कारण क्या है? हम हर जगह पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक्स में भी पढ़ते हैं, पुल एंड पुश फैक्टर्स. बट उसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि ये तीन कॉनोटेशंस क्या हैं. सो फर्स्ट वी गो टू द बिहेवियरल अप्रोच. नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज डिवोटेड टू सिटीज एंड नंबर ऑफ थ्योरीज आर बेस्ड. आपने अगर अर्बन ज्योग्राफी पढ़ लिया है एज अ अंडर ग्रेजुएट सिलेबस, तो आपने देखा होगा, आपने बर्गस की थ्योरी पढ़ी है, आपने होमोहॉइट की थ्योरी पढ़ी है, उसके बाद आपने हैरिस एंड उल्मन की थ्योरी पढ़ी है, उसके बाद हम क्रिस्टॉलर भी पढ़ते हैं. बट देयर आर नंबर ऑफ थ्योरीज व्हिच हैव बीन गिवन, और हम बार बार यही समझते हैं, सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या ये थ्योरीज इंडिया में एप्लीकेबल है या अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग, लेस डेवलप्ड, जो भी टर्मिनोलॉजी आप यूज करना चाहें, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ डिबेट, जो भी टर्मिनोलॉजी आप यूज करना चाहें, क्या वो वहां एप्लीकेबल है या नहीं. मैं भी इस लेक्चर के थ्रू यही क्वेश्चन आपके ऊपर आपके सामने रखना चाहती हूँ कि क्या जो मॉडल्स हम बात कर रहे हैं या जो प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन हम पढ़ रहे हैं, हमने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी भी पढ़ी और उसमें भी हम कहते हैं कि इंडिया अभी सेकेंड लास्ट स्टेज पे है, जबकि कंट्रीज तो फोर्थ स्टेज तक पहुंच गई है. बट मेरा क्वेश्चन, जो भी इन थ्योरीज को रेप्लिकेट करना चाहता है इंडिया में, हम सबसे ही है, बिकॉज हम ही एकेडमिशियंस हैं जो आपको ये पढ़ा रहे हैं और हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाया है. तो क्या एक्चुअली हमारी हिस्ट्री सेम है क्या? हमारा इन सिटू, हम जहां पर हैं वो सेम है क्या? तो उसी के लिए हमें ये अप्रोचेस समझनी है. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, जो बिहेवियरल अप्रोच है, इट इज क्वांटिफाइबल. I can easily quantify, and I have size, density, and diversification. So size, larger the size, more is the segregation. Now this you will easily understand, especially if you have ever visited to any of the big cities in India, where I say, जिसको हम मेगालोपोलिस कह सकते हैं या मेट्रोपॉलिटन कह सकते हैं या कॉस्मोपॉलिटन कह सकते हैं. Again, terminology does not matter here. What matters is how you conceive that particular concept. So we have Delhi, we have Mumbai, basically the two. Why Calcutta and Chennai are put in another, scale? Reason being, they are more dominated by their culture. When you go to Calcutta, the Bengali culture is somewhere dominant. Same when you go to Chennai, the Tamil culture is dominant. But when we visit Delhi, all of us residing in Delhi are migrants. Nobody belongs to Delhi. Same when we go to Mumbai, yeah, you may say, ma'am, Mumbai mein to Marathi culture hai. But Mumbai has come up as the economic, commercial capital of India. So economy becomes the major issue out there. And that is why somewhere the Maratha culture or the Marathi culture has subdued. Now, when we see size, we see that the size is very important when we talk of urbanization or urban settlements, because larger the size, more is the segregation. Here I've shown you the picture of top 20, larger cities by population size, and you see Delhi is the second. Delhi, then we also have Mumbai at the 9th. Right. So, and Kolkata at 16th. So just imagine, out of 20 cities, three of the cities are in India. Next, we talk of density. I got this beautiful picture, from one of the websites only, which shows how the density is there. So see, interestingly, Hong Kong has very densely populated. After Hong Kong, we have Mumbai. And Mumbai is, because Mumbai is one of the largest cities, not only in India, but all over the world. As I said, in population, it is 9th, but as the commercial capital, it is one of the most important cities in India. Rather in South, if I say in subcontinent or even in southern part of Asia, I wouldn't be wrong.
So if there is more density, it leads to mutual exploitation, because I want to survive, you know, survival of the fittest comes here. अब मुझे अगर survive करना है तो भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. I become insensitive and somewhere I become inhuman. And I feel, you know, the basic characteristic, you know, of urban is that if you have to survive, because you know you want to be there, you want to be urbane, you want to be associated with that urban thing, you try to become insensitive. And that is very clear if you just, you know, ponder yourself. If you have been to any of the cities, just आप बैठ के एक बार सोचो कि आप कितने लोगों को इस शहर में जानते हो. और मैं अभी कल ही जब ये पीपीटी बना रही थी तो दिल्ली के, ये शहर नहीं ये महफिल है, ये मैंने दिल्ली के लिए पढ़ा. तो आप देखिए हर सिटी के ऊपर कहीं ना कहीं एक कोई ना कोई कोट आएगा, क्योंकि शहर है ही ऐसी चीज और हम सब उससे एसोसिएट करना चाहते हैं. और यही बिहेवियरल अप्रोच कहना चाहता है. डाइवर्सिफिकेशन, एवरीबॉडी इज फ्रॉम एनीवेयर. हमसे कोई नहीं पूछ रहा आप कहाँ से आए हो. हम सब अब बिहार में ही देखिए, जब लोग बोलते हैं कि अच्छा आप कहाँ से आए, बिहार में एवरीबॉडी इज फ्रॉम पटना, बंगाल में एवरीबॉडी इज फ्रॉम कैलकाटा. And I tell them, you know, when my students say, मैम मैं कलकत्ता से हूँ, मैं बोले भैया एक बात बताओ, कलकत्ता में पैदा हुए हो? नहीं मैम. कलकत्ता में पढ़े हो? नहीं मैम. तो भैया कहाँ से हो? मैं मेदिनीपुर. मैं मुर्शिदाबाद. मैं कहा भैया तुम ज्योग्राफर से बात कर रहे हो ना, तो मुझे तो मालूम है कि भाई कहाँ पे कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा दूसरा शहर है. नहीं मैम, लोगों को मुर्शिदाबाद या मालदा या मेदिनीपुर बताते हैं, उन्हें पता नहीं. Now, why is it so that the whole identity of West Bengal or of Bihar is associated only with the major cities of those states? So these, you know, I just want you to, you know, like just keep on thinking of these questions as I proceed. That how, when we are staying in an urban area, how the things around us are being perceived when we are studying them, when we are writing about them, and when we are living as urban people. So the structural approach, where very simple definition, it changed from industrial communities to agricultural communities to industrial communities. And this is what has happened in the Western world. This is very important when we actually study urbanization in India, because occupational change take place. Now, when this has happened, what has happened? Industrial revolution occurred in the late 19th century in the Western world. And we always have been studying this, that industrialization is the major cause for urbanization, because people were, you know, working there. And so they shifted from their village or their village life to the places where these industries were set up. And so the industrial towns came over. And even there, you know, there was this huge disparity. We had the factory owners and we had the factory workers. जो हम अगर हम बात करते हैं पूरा हम dialectical materialism की बात करें, या हम capitalist employee trade की बात करें, या हम feudal lords की बात करें, तो जितना भी ये जो पूरी सोसाइटी में हमारे डिविजन है जो हैव्स एंड हैव नॉट्स का, ये हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद और प्रोमिनेंट दिखता है. और ये सिटीज में और ज्यादा दिखता है अगर वो सिटीज इंडस्ट्रियल टाउन्स है. बट जैसा मैंने आपको अपनी पिछली वाली स्लाइड में दिखाया, डाइवर्सिफिकेशन है बट हमें सेग्रीगेशन भी मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं देयर इज एन ओवरलैप बिकॉज एवरीबॉडी इज फ्रॉम एनीवेयर. So the structural approach simply says that the village life has changed to city life, as you can see these pictures, and people have shifted. The occupation of people have changed from agricultural to non-agricultural occupations. Now, geographical approach. This is very important because we are the students of geography. This is demographic in nature. Now, the rural settlements are being transformed into urban settlements. Now, this takes place because of two reasons. Two reasons as we study in books: growth of individual towns, multiplication of towns. Now, growth of individual towns, as you know, like here again I will say, like you have been studying of this concept called urban sprawl, right? Urban sprawl ye hota, urban sprawl is not positive. Urban sprawl is a big problem for the city, and then lot of theories and lot of, और आजकल जब आप GIS यूज कर रहे हैं, अगर आपने urban sprawl डाला, land use land cover का मैप बनाया और urban sprawl को हमने quantify कर दिया. But my question is, urban sprawl is you know, like problematic for the Western cities. How come it is problematic for Indian cities? Because I don't see any urban sprawl in Indian cities. What I see is urban expansion.
Because why? Because my city, the Indian city, is very different from that of the Western city. और आप फोटोग्राफ्स भी जब देखोगे, जब आप कैलकाटा की फोटो आप आज ना एक जाकर प्लीज एक काम करिएगा, आप एक बार न्यूयॉर्क की एरियल व्यू देखिएगा, आप लंदन का एरियल व्यू देखिएगा, पेरिस का देखिएगा, इवन हैम्बर्ग, बर्लिन सब देखिएगा। उसके बाद आप कैलकाटा, मुंबई का भी देखिएगा, स्पेशली जहां आपको धारा भी दिखे, ठीक है, कैलकाटा का देखिएगा, इवन अपनी रांची का देखिएगा, यू विल सी अ vast difference. अगर अब आप ये बताइए, मैं if I have to wear a cloth which is of double XL size, why should I see a particular rack which has a small size clothes? Suddenly तो कुछ miracle नहीं हो जाएगा ना कि मैं double XL से small size में आ जाऊंगी, ऐसा नहीं होगा। तो मेरा कहने का आपसे मतलब ये है कि जब हम ज्योग्राफिकली हम सिटी को परसीव कर रहे हैं, हम बार बार क्यों ये सोच रहे हैं कि भाई लंदन जैसा मेरा शहर होना चाहिए या न्यूयॉर्क जैसा मेरा शहर होना चाहिए। और यहीं पे मेरा फिर एक क्वेश्चन है कि अर्बन स्प्रॉल इंडिया में एज सच नहीं है, क्योंकि इंडियन सिटी अभी भी ट्रांजिशन स्टेज पे है। उसका कारण क्या है? उसका कारण सबसे बड़ा क्या है कि वी हैव नेचुरल इंक्रीज इन माइग्रेशन, mobility of population. See, I got a very nice this cartoon which says megatropolis 10 kilometers. पहले 50 kilometers था, फिर 30 kilometers हुआ, फिर 10 kilometers. We are waiting for the city to come to us. Somewhere this is what is happening. So if a person who's staying about 30 kilometers far from city has this dream that the city is coming to me, he is not thinking कि oh my god city के साथ सारा problems भी आ रहा है, वो ये सोच रहा है कुछ अच्छा आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सिटीज एक्सपैंड कर रही है, अगर सिटी ग्रो कर रही है, कहीं कुछ पॉजिटिव हो रहा है, और तभी तो पीपल आर मूविंग फ्रॉम द कंट्री साइड टू द सिटीज एंड टाउन्स। So when cities grow, it is because one reason is because there is growth of individual towns, and second is multiplication of towns. Now this is very evident when we see the data, and you know data is the best thing to be manipulated. We all do that. Even आपको भी अगर डेटा क्लास में मैम ने कुछ करने दिया है, आई एम श्योर अभी तक आपने कभी ना कभी तो डेटा मैनिपुलेट किया होगा। डेटा इज द इजीएस्ट थिंग टू बी मैनिपुलेटेड, और नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है। बट कहने का मेरा मतलब यहाँ पे क्या है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टाउन्स, आप देखिए हर साल हमारी मिलियन सिटीज बढ़ रही है। 1951 में 2 थी, अब 53 बता रहा है, और कहा जा रहा है कि बाई जो जब 2011 का सेंसस आ जाएगा, द नंबर विल इंक्रीज 60। हाउ, कैसे, ऐसा कैसे हो रहा है कि सडनली मेरी मिलियन सिटीज इतनी बढ़ रही? सिंपल, नंबर इज इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन। बट उसके साथ साथ मैंने क्या किया, मैंने सिटी की डेफिनेशन भी चेंज कर दी। जैसे आप देखेंगे, इसका एक और एग्जांपल जो सेंसस करता है, लिटरेसी की डेफिनेशन, सडनली हमारे देश में 80% जनता जो है लिटरेट है। इट्स ऑल इन द डेफिनेशन, and that is why I have kept, you know, how urban area should be defined in my lecture, and how people are defining urban area. So basically there are two processes involved: natural increase and migration. So what is basically, see here, which I was talking of, push and pull factors. So somewhere there is this magnetic pull. So sociological definition of an urbanization is when rural population shifts to urban areas, they are characterized by role differentiation, division of labor, and industrialization. Now I put industrialization last, the reason being, when I define my own definition of urbanization, I do not want to relate it to industrialization, because our country is not experiencing such. Economic definition, when agricultural communities are transformed into industrial communities, and demographic definition, rural settlements are transformed into urban settlements. And that is why you have huge number of concepts, you know, rural urban fringe, peri-urban areas, बहुत सारे आपको नए नए concepts जो आप जैसे ही आप urban geography पे वो chapter complete करते हैं, तो rural urban interlinkages में आपको वो करीब 30-40 टर्मिनोलॉजी मिल जाएंगी। मैंने भी कोशिश की थी एक टर्मिनोलॉजी देने की, बीडेड अर्बनाइजेशन, जहां पे मैं ये बताना चाह रही थी, I'll come to that later when I discuss. Now this is the concept. मतलब अब जब हम अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं, मैंने अक्सर देखा है, मेरे दिमाग में भी ये कंफ्यूजन था जब मैं अपनी मास्टर्स कर रही थी, बट आज क्योंकि मैंने पढ़ा, एंड आई एम एट दैट प्लेस वेयर आई कैन एक्सप्लेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अर्बनाइजेशन एंड अर्बन ग्रोथ and urbanism. Now what is urbanization? It is a process
which leads to higher proportion of the total population of an area to live in cities and roads. As you can see this graph, urbanization in India. So when I say the definition, it's 26%. Census definition, it changes to 31%. If I take 5,000 plus population, why I'm taking 5,000 plus population? Because in our census, it is said that any settlement which has 5,000 plus population should be regarded as an urban area. So it becomes 47%. If I say 800 persons per square kilometer, but I'm taking density, it becomes 55%. If I reduce the population by 2,500 people, it goes to 65%. And if I come again to the one of the definitions, one of the criteria which census take, that is the density should be 400 persons per square kilometer, it reaches 78%. Now, is it actually the right way to define an urban area? No, there are again question marks. But still, when you understand urbanization, you have to think, you have to perceive and take it inside you that it is a process which basically, in very simple words, बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझना है कि urbanization एक process है जिसका मतलब क्या है कि total population से कितने % लोग cities और towns या urban settlements में रहते हैं. But what is urban growth? It is the absolute or simple growth in number of urban dwellers. So it is quantified. See, that is why you see here the percentages, the population is in millions, and the percentage is it's basically, it's not in percentage, it is in population in millions. So the graph is like, going up. बट आप देखेंगे इंटरेस्टिंगली जब हम इंडिया पे बात करेंगे कि ग्रोथ रेट, डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ अर्बन ग्रोथ रेट में कहीं पे चेंज आया है. अब हम आते हैं जो मैं बोल रही थी, जो मैं बताना चाह रही हूँ कि क्यों मैं मान रही हूँ कि हम वेस्टर्न अर्बनाइजेशन के मिथ्स को तोड़ रहे हैं. इट्स द कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ अर्बनिज्म. इट्स अ वे ऑफ लाइफ. जो मैंने पहले भी अपने हर लेक्चर में ये कहती हूँ कि अगर आप मुझसे पूछेंगे व्हाट आर यू, आई विल बी लाइक आई एम एन अर्बन पर्सन. व्हाई? 95% of my life I've been staying in urban cities. Half of my life I was in Calcutta, half of my life I've been in Delhi. मुझे मालूम ही नहीं गांव कैसा दिखता है भारत का. मैं फील्ड वर्क करने के लिए गई हूँ. बट अगर आप मुझसे कहेंगे कि भाई मैम आप ये बता दीजिए या तरुणा आप ये बता दो कि भाई क्या एक एग्जैक्ट आपको दिख रहा है, मे बी पढ़ाई की है इसीलिए कुछ जवाब दे दो, बट आई वोंट हैव दैट फील ऑफ रूरल लाइफ. आई एम एन अर्बन पर्सन. और इसमें ऐसा कुछ नहीं कि उसको मैं बहुत अपने कोई ईगो पे ले रही हूँ या मैं अपने आपको बहुत बड़ा आपसे बड़ा मान, नहीं. द ओनली थिंग इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इट जस्ट बिकम्स योर वे ऑफ लाइफ. आप जैसे कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, अब अगर आप निर्मला कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मैं मान के चल रही हूँ कि आपका कॉलेज जो है रांची में वन ऑफ द बेस्ट है, तो आपको एक थोड़ा सा ना मतलब अपना कॉलर ऊपर करके देंगे, अरे हम निर्मला कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं. जैसे हम JNU में करते थे तो हम जामिया वालों को कुछ नहीं समझते थे. आज मैं जामिया में जॉब कर रही हूँ. राइट. सो क्या होता है, आपको थोड़ा सा वो एक व्हाट शुड आई से, यू हैव अ फेदर इन योर कैप. Oh, I'm this. So same is urbanism. It's just the way you perceive yourself. It's my way of life. So I believe that, oh yeah, ये तो गांव से आया है, इसको क्या मालूम है, अरे तुमने कभी पिज्जा खाया है, नहीं, अरे तुमको पता नहीं हमने कितने हमारे यहाँ तो मॉल है बड़े बड़े. But we just tend to forget that वो मॉल किस कॉस्ट पे बने हैं. Right. So there are problems, but urbanism, when we talk of urbanism, जो लुइस वर्थ कहना चाह रहे थे, वो यही है कि it becomes a way of life. So how do we define now urban? इतनी सारी चीजें, अब आप सब कहेंगे मैम इतनी सारी चीजें कह रही है तो भैया हम डिफाइन कैसे करें? No, people have worked on it, and this like 1981 में और 1984 में अटेम्प्ट करने के बाद ये कहा गया any place is an urban area if it is made up of permanent structures and the land on which they are situated. Transportation corridors, roads, railways and canals. Naturally canals again आप बोलोगे, but they are अगर हम Danube यूरोप को देखें तो waterways become one of the major transport networks. ठीक है ना. तो इसीलिए canals यहाँ पे ऐड किया, और roads and railways तो हम मानते ही हैं which are less than 50 meters apart. मतलब बहुत दूर नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं है built up site से बहुत दूर है तो नहीं होगा. ट्रांसपोर्टेशन फीचर्स जो है जैसे रेलवे यार्ड्स, मोटरवे सर्विस एरियाज एंड कार पार्क्स, इसमें इवन एयरपोर्ट्स है. नाउ वी हैव मेट्रोस.
मिनरल वर्किंग एंड क्वेरीज, नाउ दिस इज बिकॉज दिस वाज इन 81 एंड 84, ये चेंज हो गया क्योंकि अब हमने दिल्ली की ही जब हम बात करें तो हमने इंडस्ट्रियल रीजन्स को कहीं ना कहीं कोर ऑफ द सिटी, सेंटर ऑफ द सिटी से दूर करके पेरीफेरी पे डाल दिया, और मिनरल वर्किंग एंड क्वेरीज भी बहुत नहीं है। ऑल्दो झारखंड में जब हम ये क्या कहते हैं आपके झरिया और जमशेदपुर जहाँ पे माइनिंग हो रही है अभी भी, वहाँ आपके रांची के आसपास भी है, तो अगर हम करें तो देयर आर, बट स्टिल यू सी द कोर ऑफ द सिटी, या कुछ सिटी के ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अर्बन सेटलमेंट के ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो ऐसे माइनिंग एरियाज या मिनरल जहाँ पे मतलब क्वेरीज जहाँ पे हैं वहां से अलग हटा के कर दिए गए हैं। सो दिस हैज बीन चेंजिंग ओवर द टाइम, एनी एरिया कंप्लीटली सराउंडेड बाय बिल्ट अप साइट्स। So this is where the urban world is. So अब ये तो हमने पढ़ लिया कि भैया अर्बनाइजेशन क्या है, अर्बन क्या, बट है कहाँ अर्बन? So you see, this is what this is one photograph which I've taken from net. So see, it just looks so beautiful now, but see the disparity. Just see the disparity. Now Americas are the most urbanized, 82%, 81%. Asia falls quite behind, rather Africa का सबसे कम है 43%, Asia is next 50%, Australia में 68%. 74% is Europe. Now you may again say, ma'am, Europe America से कम कैसे है? But then this is again, I just said, data work है, इसमें मैंने काम नहीं किया. This is what data says. Now, how do we define urban areas in different continents? And why this map is like this? ठीक है ना, ये मैप, इसमें भी बहुत सारा डेटा का खेल है, और क्यों ये है, बट हमें जब हम कोई भी चीज क्वेश्चन करते हैं तो हमें पहले उसके पता फीचर्स पता होने चाहिए, तभी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। जब हमें पता ही नहीं उस चीज में क्या है तो क्वेश्चन करने का कोई लॉजिक नहीं है। और इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप देखो कैसे डेफिनेशन जो है अर्बन एरियाज की हर जगह अलग है। यूएसए में है प्लेसेस ऑफ 2500 और मोर इनहैबिटेंट्स, और ये मैंने अभी आपको अगर थोड़ा सा याद है, मैंने अपनी स्लाइड में बताया कि अगर हम इंडिया में 2500 प्लस पॉपुलेशन ले देते हैं तो हमारी जो अर्बनाइजेशन है 65% पहुंच जाएगी 31% से, right? So see how the data plays the role. Now Canada में it's more than 1000 or more inhabitants and population density of 400 or more per square kilometer. And this is a typical US city or in Canadian city looks like. You know, high-rise buildings, बहुत dense है, and we all are so fascinated. Especially अगर English movies देखते हैं तो लगता है wow, इससे ऐसा काश मेरा दिल्ली, काश मेरा रांची, काश मेरा कलकत्ता ऐसा क्यों नहीं है ना? हम हर कोई ये सोचता है काश, but then life is much more than that. This is South America. Population Argentina में है 2000 or more inhabitants and Peru में 100 or more dwellings. So see it changes. So see the dwellings आया, population कब हो गया, तो आप देखो ऊपर वाला जो फोटोग्राफ है जो आपको दिख रहा होगा वो जो है वो अर्जेंटीना का है, और जो नीचे वाला वो लीमा का है, पेरू की कैपिटल का, दोनों कैपिटल सिटीज का है. So see साउथ अमेरिका में कितना डिफरेंस है दोनों शहर के मॉर्फोलॉजी में. मॉर्फोलॉजी का मतलब हुआ कि बिल्डिंग्स और रोड्स का अरेंजमेंट कैसा है. तो आप देखो कैसे दोनों बहुत अलग दिख रहे हैं, और ये आपको थोड़ा सा जोधपुर का फील दे रहा होगा. अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जोधपुर की फोटोग्राफ जरूर देखिएगा, इमेज जरूर देखिएगा, तो आपको ये थोड़ा सा जोधपुर का फील देगा. जोधपुर ऑल्दो इज ब्लू, मोर ऑफ ब्लू इन कलर, बट आपको ये जोधपुर की फील देगा. Then we come to Europe. So the most beautiful, one of the beautiful cities, Paris, and this is Netherlands में The Hague. So see, this is like here. Why? Because it is like France says 2000 inhabitants living in contiguous houses with not more than 200 meters between houses. मतलब ये नहीं, आप कनाडा में जैसे one of my friend visited, वो कहता था भैया मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर जाकर एक घर है. तो फ्रांस में ये नहीं चलेगा. फ्रांस में आपके जो 2 घर हैं वो 200 मीटर से ज्यादा दूर नहीं होने चाहिए, और तभी वो एक अर्बन एरिया कहलाएगा. और नीदरलैंड्स कहता है वहां पे म्यूनिसिपैलिटीज हैं जैसा फ्रांस में कम्यून्स हैं कि पॉपुलेशन जो है सिर्फ 2000 होनी चाहिए. तो आप सोचो हमारी 5000 पॉपुलेशन होने पे हमारे इतने शहर हैं, तो अगर हमने 2000 पॉपुलेशन कर दी तो हमारे तो मतलब क्या कहते हैं देश में सिर्फ शहर ही शहर होंगे. बट क्या वो शहर हैं, क्वेश्चन यहाँ पे है. Now India, we have taken these three criterias and census इसी के basis पे urban area define करता है. A density of 400 persons per square kilometer, having 5000 or more inhabitants, and at least 75% of its male working population in non-agricultural activity. अब देखिए यहाँ पे भी male working है, भैया क्यों female क्यों नहीं? Again a question can be there कि why only male? आज तो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट भी बहुत ज्यादा है, और अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ दी अर्बन प्लेसेस पे सर्विस सेक्टर में तो फीमेल ही काम कर रही है, चाहे वो ब्यूटिशियन हो, चाहे वो आपके क्या कहते हैं घर में डोमेस्टिक मेड्स हो, स्कूल में टीचर्स हो, और हॉस्पिटल में नर्सेज हो. तो फीमेल पार्टिसिपेशन भी तो उतना ही है. बट देन दिस इज अ डेफिनेशन जो सेंसस ने अप्लाई किया है
तो हम उसी को मान के चल रहे हैं। Japan, 50,000 or more inhabitants. You see, now suddenly the population has increased with 60% or more of the houses located in the main built-up area. 60% or more of the population engage in manufacturing, trade, or other business types, urban business types. That means it has to be urban. So they have their own definition of urban. और ये देखो आपको ये मैंने एक मुझे ये नहीं मालूम ये इंडिया का कौन सा शहर है, but it is like some city, some big city in India, and this is in Japan. So now Africa, see this is Botswana and Ethiopia. तो आप देखो यहाँ पे जो मैंने अभी बताया आपको, it's only 43%, बहुत कम जगह पे ये है. So Botswana में it's 5,000, 75% of the economic activities of non-agricultural type. इथोपिया में localities of 2,000 or more dwelling. नीचे वाला जो इथोपिया का टाउन है. और ये मैंने एक साउथ अफ्रीका का भी दिया, जोहानिसबर्ग का ये है, क्योंकि जोहानिसबर्ग अगेन यू नो वी गो बैक टू द हिस्ट्री. बार बार मैं क्यों कह रही हूँ हिस्ट्री में जाने, क्योंकि यू नो प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट. हमने जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ा, बट हमारे रूट्स जो हैं वो हिस्ट्री में ही होते हैं. सो जोहानिसबर्ग जो है साउथ अफ्रीका हैज इट्स हिस्ट्री, कॉलोनियल हिस्ट्री. ब्रिटिशर्स वहां रहे हैं, वहां पे भी रेशियल डिफरेंशिएशन रहा है. तो कहीं ना कहीं वो जो यूरोपियन टच है, वेस्ट का टच है, वो हमें साउथ अफ्रीकन की सिटीज में मिलता है. तो जोहानिसबर्ग में आपको ये देखने को मिलता है. So finally, what is urban? By 2030, it is said that 60% of the world population will be urban dwellers. But उससे पहले मुझे पता होना चाहिए. तो कार्टर, जिन्होंने urban geography की बाइबल लिखी है, जिसको मैं मानती हूँ एटलीस्ट कि कार्टर ने urban geography की बाइबल लिखी है, उन्होंने ये कहा, any of these 7 criteria, either taken singly or in combination, can be defined. When we define this, a population or settlement becomes urban. Specifically named settlements, like we have municipal councils, municipalities, we have cantonment areas. Settlement designated urban by administrative status, जैसे census towns. Minimum population जो मैंने अभी आपको बताया 2,000 भी है, 2,500 भी है, 5,000 भी है. Minimum population density हमारे यहाँ 400 है, but एक जगह कहीं पे 800 भी हो सकती है, कहीं 200 भी हो सकती है. Proportion engaged in non-agricultural occupations. अभी हमने देखा कि जापान कह रहा है 60% होना चाहिए, हमने कहा 75% होना चाहिए. Contiguity either to include a suburban area or exclude an area of loosely scattered settlements. Now अगर मैं अब जैसे कह रही हूँ, मैंने एक इंडिया में एक बना दिया कंसेप्ट नेशनल कैपिटल रीजन. अब आप उसको अर्बन कहेंगे या क्या कहेंगे ये किसी ने डिफाइन नहीं किया, बट नेशनल रीजन. अब मेरा क्वेश्चन जिसने ये बनाया उससे ये है कि नेशनल कैपिटल रीजन में तुमने हरियाणा का भी पार्ट दे दिया, तुमने उत्तर प्रदेश का भी पार्ट दे दिया, तुमने राजस्थान का भी पार्ट दे दिया. अब इसको एडमिनिस्टर कौन करेगा? और ये क्या है, अर्बन है, रूरल है, रू अर्बन है, क्या है, हमने नहीं किया. तो कहीं ना कहीं देयर इज अ गैप. तो वो गैप नहीं होना चाहिए. वो कहता है कि अगर मैं कह रहा हूं, अगर हम कह रहे हैं कि भाई जैसे दिल्ली को जब डेवलप करने की बात हो रही थी, प्लान करे, सैटेलाइट सिटीज कहा गया. तो दिल्ली की 7 सैटेलाइट सिटीज थी, जिसमें से हम फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांव, ये सारी जो है ये बहुत अच्छे से डेवलप हो गई. बट गाजियाबाद इन सबसे थोड़ा सा पीछे, इवन फरीदाबाद भी, गुड़गांव और नोएडा सबसे ज्यादा. तो हमने एक टर्म दे दिया सैटेलाइट टाउन. तो हमने ये कह दिया कि भैया सैटेलाइट टाउन दिल्ली का है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी अर्बन होनी चाहिए, दिल्ली जैसी होनी चाहिए. तो हमने डिफाइन कर दिया. वहीं पे हम किसी एरिया को कह देते हैं कि नहीं ये दिल्ली का पार्ट नहीं है. हमने वहां पे एकदम मतलब जैसे दिल्ली में ही, आपने अगर कभी नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताती हूँ, कुछ एरियाज है जो अर्बन विलेजेस के नाम से कहे जाते हैं. अर्बन विलेजेस मतलब वो उनके अंदर, विलेज के अंदर, दिल्ली के अंदर ही करीब 123 या कितने अर्बन विलेजेस हैं, और उनके यहाँ पंचायत है, एंड दे आर नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और एनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. तो हमने उसको अलग कर दिया कि भैया ये दिल्ली में होकर भी दिल्ली के पार्ट नहीं. फंक्शनल कैरेक्टर भाई नॉन एग्रीकल्चरल होना चाहिए तभी. और ये फिर मैंने वही चीज दिखाने की कोशिश की है कि कैसे उसी डेफिनेशंस के बेसिस पे जब हम पॉपुलेशन को मेन लेते हैं, हमारे मेजर शहर कौन से हैं. नाउ प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन जो मैंने पहले बताया, सिंपल, हम हमेशा समझते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. there's an arrow settlement. Now there can be 2 types. One is demographic, the administrative. Administrative में there is an existing village incorporated into existing town and incorporated into existing city, comes into city proper, सब करके city proper में urban clustering हुआ तो urban agglomeration बना और metropolitan area बना. अब उसमें भी हमारे पास फिर डेफिनेशनल डिबेट्स हैं, हम उन डिबेट्स में अभी नहीं जाएंगे. बट देन अ मेट्रोपॉलिटन एरिया इमर्जेस. सिमिलरली अगर हम डेमोग्राफिक जाते हैं, नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ विलेज में, फिर वो ग्रोथ होते होते उसमें माइग्रेट हुए लोग टाउन में, टाउन से फिर ग्रोथ हुआ, माइग्रेट हुए लोग टाउन से सिटी में. तो इट्स अ स्टेप वाइज माइग्रेशन जो हम पढ़ते हैं वो हुआ. पॉपुलेशन ग्रोथ हुई और सिटी जो है, सिटी प्रॉपर के साथ एक
अर्बन क्लस्टर टाइप बना, और फिर फाइनली लीड्स टू अर्बन एग्लोमरेशन और अ मेट्रोपॉलिटन एरिया. Now this is the most interesting part, which all जो मैंने अभी तक आपको बोला वो सारा जो मुझे मतलब सम अप करना है वो यहाँ पे करना है कि क्यों मैं जो है इसको टेल कह रही हूँ. मतलब एक टेल मतलब होता है ना फेरी टेल, बहुत सुनहरा सपना. क्यों मैं इसको अपना एक सुनहरा सपना कह रही हूँ और क्यों मैं कह रही हूँ कि ये जरूरत है. अगेन यू मे डिफर विद मी, आई एम फाइन विद इट, और मैं आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब देने की भी कोशिश करूंगी. बट मेरे हिसाब से दिस इज द नीड ऑफ द आवर. अर्बनाइजेशन में हमें मेट्रो सिटीज ही चाहिए दिल्ली में, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम वापस वो पुश और पुल इफेक्ट पे आते हैं, या हम ये कहें कि हमारी प्लानिंग की प्रॉब्लम रही है कि हमने इतने सारे प्लान्स 5 ईयर प्लान्स भी बनाए, अर्बन प्लानिंग भी की, हम हर सिटी का मास्टर प्लान भी बनाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं मेट्रोपोलाइजेशन या मेट्रोपोलिस जो है या मेट्रोपॉलिटन इंडिया जो है वो क्यों एकदम सब पर हावी तो नहीं कहूंगी मैं, क्यों लाइमलाइट में आ जाता है. क्यों ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं हम बड़े शहरों की तरफ ही दौड़ते हैं, या क्यों हम मतलब बड़े शहरों की ही बात करना चाहते हैं, हम क्लास 2 और क्लास 3 टाउन्स की बात नहीं करना चाहते. उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि सबसे पहले आप ये देखो कि अर्बनाइजेशन हैज इंक्रीज फास्टर देन इट वाज एक्सपेक्टेड. Nobody thought 1951 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, किसी ने नहीं सोचा था कि अर्बनाइजेशन इतनी तेजी से बढ़ेगा. आप देखो विद इन 60 इयर्स हम नियरली डबल द पॉपुलेशन ऑफ अर्बन हो रहे हैं. 17 से हमारा 31 हो गया, और मैं 110% श्योर हूँ कि जो 21 का सेंसस आएगा इट विल क्रॉस 35. तो मतलब 70 सालों में हमारी अर्बन पॉपुलेशन जो है वो डबल होगी. तो अब आप सोचो, अगर अर्बन पॉपुलेशन डबल हो रही है और हमारा ग्रोथ रेट भी डबल हो रहा है, तो आप ये सोचो कि सॉरी ग्रोथ रेट डबल नहीं, अर्बन पॉपुलेशन डबल हो रही है, तो आप ये सोचो कि कैसे इस सारी पॉपुलेशन को कंटेन किया जाएगा. और जब हम कंटेन की बात करते हैं तभी मैं कह रही हूँ कि अर्बन स्प्रॉल नहीं है, इट्स जस्ट अर्बन एक्सपेंशन. ठीक. तो दूसरी चीज जो ये बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे देश के लिए वो ये है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो है वो आया है 1980s 90s में. देखो आप ग्रोथ रेट कम हुआ है 4.61, 3.64, 3.15 एंड 3.18. अब इसमें क्या हुआ, इसका सबसे जो इसका वो आंसर ये है कि हमारी बेस ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है. तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टाउन्स अब कम हो रहे हैं, बट हमने क्राइटेरिया नहीं बदला. अभी तक हमारे सेंसस में किसी ने ये काम नहीं किया कि भैया मैं अर्बन जो सिटी है उसको 5000 से पॉपुलेशन को 10,000 कर दूं, या मैं डेंसिटी जो है बढ़ा के 400 से 800 कर दूं. क्यों? उसमें क्या फिर बहुत सारा फिर वहां पे फंड की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो पॉलिसी है उसमें फंड बहुत अच्छे से डिफाइंड है कि दिस इज फॉर अर्बन एरियाज एंड दिस इज फॉर रूरल एरियाज. तो फिर वो फंड की प्रॉब्लम हो जाएगी. तो जैसे ही एक शहर सिटी से वो टाउन से वो विलेज की तरफ आ जाएगा, तो फिर वहां पे बहुत बड़ा एक डिबेट और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन शुरू हो जाएगा. सो I think to avoid these policy makers are not even thinking on that. But what has actually happened in 2011 is that the absolute increase in urban population was higher than in the rural population. और ये perceive किया जा रहा है कि 2030 में, by 2030, which is just 9 years ahead, like the number by which 6 times number by which GDP will be multiplied, that is in cities, 590 million people will be living in cities, 70% of the new employment will be generated in cities, 91 million urban households will be middle class up to from 22 million. So सोचो 2010 से 2030 20 साल में nearly 4 times बढ़ जाएगा आपका urban middle class. And 68 cities will be population of 1 million plus. जो मैंने अभी आपको कहा कि अभी मैं जो डेटा देख रही थी मेरे हिसाब से तो 2021 का डेटा ही बताएगा 62 या 63 cities. बट इंटरेस्टिंगली आप देखो जब हम इसको कंपेयर करें बाकी डेवलपिंग कंट्री से, तो हमारी पॉपुलेशन 31% सिर्फ है अर्बन, जबकि चाइना में 45% है, इंडोनेशिया में 54% है, मैक्सिको में 78% है, और ब्राजील में 87% है. तो हम लेस अर्बनाइज्ड हैं, बट हमारी अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. तो ये हमें हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा कि एज व्हेन वी सी द परसेंटेज अर्बनाइजेशन जब हम देखते हैं तो वी आर लेस अर्बनाइज्ड, बट द प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इज ह्यूज. Now, when I said, we have to think into metropolises of India, we have to also think into the classification of towns which has been provided by census. And this all you must have read. If not, just just open the class size towns of India and you'll see
Now, class 1, class 2, class 3, class 4, class 5, class 6, right? These are the 6 classifications on the basis of population. After class 1, this class 1 has been categorized into, like million cities and mega cities and large. We have mega cities where we have population above 10 millions. Then we have large metropolitan cities where the population ranges between 5 to 10 millions. And अगर वो population 1 to 5 million है, उसको million cities कहते हैं. और अगर वो below like मतलब 0.1 से 1 million के बीच में, तो वो class 1 में other cities में आते हैं. तो ये हमारे हैं क्लासिफिकेशन. और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आप देखो क्या है, जो ये एरो आपको ब्रोकन एरो दिखा रहा है, कि हम हमेशा, स्पेशली अगर आपने अमिताभ कुंडू को पढ़ा है, तो कुंडू सर, ही वाज वन ऑफ द टीचर्स हु टॉट मी इन JNU. ही ऑलवेज यूज्ड टू से व्हेन ही यूज्ड टू टीच अर्बन ज्योग्राफी और अर्बनाइजेशन पढ़ाते थे, और अभी भी मैंने उनके बहुत सारे आर्टिकल्स में देखा है, वो एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, टॉप हेवी अर्बनाइजेशन इन इंडिया. नाउ टॉप हेवी अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है कि ये आपको जो राइट में ग्राफ दिख रहा है उससे उनका मतलब था, स्पेशली आफ्टर 1951 की वो बात करें. जो ब्लू वाला बार आप देख रहे हो, दैट इज बेसिकली क्लास 1. तो उनका ये कहना था कि जो हमारा अर्बनाइजेशन प्रोसेस है वो ऐसा है कि सारी की सारी जो डेवलपमेंट या ग्रोथ हो रही है, जो वो क्लास 1 में हो रही है, तो वो टॉप हेवी हो जा रहा है. और अगर नेचुरली आप सोचो, अगर आप सर पे बहुत ज्यादा बड़ा बहुत भार ले लोगे, आपकी अपनी कैपेसिटी है ना, आप मे बी 10 किलो, मतलब मुझे तो कोई बोलेगा शायद 5 किलो भारी उठा पाऊंगा अपने सर पे, पर किसी की कैपेसिटी होगी वो 7 किलो उठा सकता है, कोई 2 किलो भी नहीं. तो मेरी कैपेसिटी के हिसाब से मैं अपने सर पे बोझ रख सकती हूँ. तो उनका ये कहना है कि भैया इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अपने सर पे, मतलब अर्बनाइजेशन के सर पे, जो क्लास 1 सिटीज हैं वहां पे पूरा एकदम 30 से 40% भार रख दिया है, और जिसके कारण वो सिटीज कोलैप्स करने लग गई है. और इसीलिए जो है इंडिया की जो अर्बनाइजेशन पूरी पॉलिसी है या प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं स्टैगर्ड है. और इसीलिए सिटीज में इतनी प्रॉब्लम्स है. हम अर्बन एनवायरनमेंट की 50 प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, पॉल्यूशन की और सैनिटेशन की, मतलब you can just go on with the problems of urban areas in India, and I am sure like huge literature is available on that. But I have again a question here. Why is it so? Why did our urbanization became top heavy? That was because other cities were ignored. आप अगर भाई जहां मुझे मेरी पसंद की चीज मिलेगी, आप अगर मार्केट में जाते हो, आप सारी दुकानों पे नहीं जाते ना, और यूजुअली आप छोटी दुकान पे तभी खरीदना चाहोगे जब आपको बहुत बार्गेन करना है या आपके पास पैसे नहीं है. आप बड़ी शोरूम में जाकर अगर उससे कहोगे कि भैया ऐसा इसको तो तुम मुझे आधे प्राइस में दो, तो वो तो नहीं देगा. तो सिंपल सी बात है भाई, कहीं ना कहीं अगर मेरा टॉप हेवी हुआ है, उसका कारण ये है कि मेरी प्रोसेस ऑफ प्लानिंग मेरी प्रॉब्लम थी. बट क्या हम उसको क्वेश्चन करें? हम उसको क्वेश्चन नहीं करें. हम क्वेश्चन किसको कर रहे हैं? अर्बन को, सिटी को. भैया सिटी जो है मर जाएगी. जैसे राजीव गांधी का बहुत फेमस स्टेटमेंट है, पार्लियामेंट में दिया था उन्होंने 1984-85 में, कैलकाटा इज अ डाइंग सिटी. ठीक है, बट आई डोंट सी कैलकाटा डाइड. कैलकाटा इज स्टिल देयर. Now, why I'm giving you this example is a city does not die. A city does not die. Why? The reason is city has its own life. अब फिर तुम मुझे क्वेश्चन करोगे, मैम रोम तो मर गया. रोम was dead. We have studied Mumford, नेक्रोपोलिस है, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. सेटलमेंट मोहनजोदारो खत्म हो गया. Yes, but was the time same? Again we are going back to the history. I am talking of today's city. आज की सिटी जो है वो टेक्नोपोलिस है, नेक्रोपोलिस तक पहुंचती ही नहीं. तो आज सिटी का मरने का स्कोप बहुत कम है. राइट. अब इसको मैंने दो चीजों को आपको एक साथ बता दिया. रीजन क्या है मेरा कहने का, कि जब हम बड़े शहर की बात कर रहे हैं, अगर हम ये कह रहे हैं, ये क्रिटिक देते हैं अर्बनाइजेशन इन इंडिया का कि इट्स अ टॉप हेवी थिंग, आई सी अ ट्रेंड व्हिच इज चेंजिंग हियर. सी दिस डाउन एरो कीज. 2011 में ही मुझे ये वाला एरो, आप देखिए ब्लू वाला बार कम होते दिख रहा है, और अगर जब 2021 का डेटा आएगा, आई एम श्योर ये बार और कम हो जाएगा. तो कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग ने नहीं तो urban people have thought about it, and now they are moving to other tier cities. उसका रीजन कहीं ना कहीं ये है कि it is urban expansion. लोगों को मालूम है, और इसका बहुत बड़ा रोल जो है टेक्नोलॉजी का है. और यहीं पे ये फिर हम वापस में जाएंगे, यहाँ पे हम दोबारा वो मिथ ब्रेक कर रहे हैं जो वेस्टर्न अर्बनाइजेशन की है. अब आप ये देखो, ये मैंने आपको दो ग्राफ दिखाए हैं. इसमें कैसे हम मिथ ब्रेक कर रहे हैं. डेवलप्ड कंट्रीज ने क्या किया, उनका इंडस्ट्रियल, जो मैंने पहले बोला, प्री इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत स्लो था.
1830 60s 90s ले लो, लेट 19th सेंचुरी लो आप, उसमें जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो रैपिड हुआ, जिसके कारण सिटीज ग्रो की. सो सी इफ यू सी दीज ग्रीन लाइन, सॉरी द येलो डॉट्स, सी इट हैज अ पैटर्न, यू नो, एक पेस में चल रहा था, ठीक है, धीरे 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 चले और पहुंच के एक प्लेटू पे आ गए हैं. अब इससे ज्यादा हम क्या होंगे, जो उनके साथ एजिंग पॉपुलेशन के साथ भी हो रहा है ना, उनका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो बहुतों का तो जीरो और नेगेटिव में भी आ गया, तो वो एक प्लेटफॉर्म एक प्लेटू पे आ गए. बट हमारे देखो एकदम शार्प है. रीजन क्या है, हमारी रैपिड अर्बनाइजेशन हुई है विदाउट प्रोपोर्शनल इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो जब मेरा जो क्राइटेरिया डिफाइन करने का अर्बनाइजेशन वही सेम नहीं है, तो भैया मेरी अर्बनाइजेशन प्रोसेस कैसे सेम हो सकती. और यहीं पे हम सबसे बड़ी मिथ तोड़ते हैं, और इसीलिए हमारी पूरी सिटीज जो है, हमारी जो पूरी सिटीज हैं वो एकदम डिफरेंट है फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड. अब देखो, सब मैंने आपको पीछे बताया कि नेचुरल इंक्रीज और रूरल अर्बन माइग्रेशन जो है वो बहुत मेजर कारण है ग्रोथ का, अर्बन पॉपुलेशन के इंक्रीज का. बट सी आई फाउंड दिस डेटा व्हिच सेज ओनली 21.1% वाज रिस्पांसिबल, माइग्रेशन वाज रिस्पांसिबल. मतलब 79% of increase in urban population is because of natural increase, expansion of boundaries and net reclassification. Reclassification किसका? Cities का, urban settlements का, जो सेंसस करता है. फिर आप देखो तो मेरा क्राइटेरिया बदल गया ना. फिर कैसे भैया मेरा शहर, मेरा दिल्ली कैसे लंदन बन जाएगा. बट क्या आपने लंदन को 150 साल पहले देखा, 200 साल पहले देखा है? नहीं देखा. मैं मतलब मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं की हैं, बट कभी मौका मिला तो जरूर आप लोगों को दिखाऊंगी, या मैं डॉक्टर देवजानी के साथ शेयर करूंगी. अब देखिएगा, पेरिस और लंदन की भी वही हालत थी जो आज हमें मुंबई में धारावी में मिलती है. और फिर मेरा क्वेश्चन ये भी है, भाई स्लम्स को आप क्यों कह रहे हो कि वो एक बहुत बड़ा नासूर है शहर के लिए? इंडिया में तो स्लम्स आर नोटिफाइड एरियाज. झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी दिल्ली में तो कितनी है, जे कॉलोनीज कितनी जगह पे है, और स्लम तो नोटिफाइड है. स्क्वाटर नोटिफाइड नहीं होता, स्लम तो नोटिफाइड है. तो जब मेरा स्लम नोटिफाइड है तो भाई फिर वो कैसे वो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है? क्योंकि मुझे तो जो चीप इनफॉर्मल इकोनॉमी का लेबर चाहिए. ये देखो मैंने एक और आपको एम्प्लॉयमेंट का दिया है कि एग्रीकल्चर से बहुत कम जीडीपी आ रहा है, सर्विसेज से मेरा 59% आ रहा है, जो कि अर्बनाइजेशन में है. बट मेरे जो एम्प्लॉयमेंट है सबसे ज्यादा आज भी एग्रीकल्चर में. कारण क्या है कि शहर में जितने भी लोग हैं उसमें इनफॉर्मल इकोनॉमी तो करीब 80% होगी. आपने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया कि भैया वो मेरी इकोनॉमी का पार्ट है. तो जब आपने ये एक्सेप्ट ही नहीं किया कि वो मेरी इकोनॉमी का पार्ट है, तो आप उसका क्या कहते हैं, उसके बारे में आप कैसे बात करेंगे? और कहीं ना कहीं अर्बन और रूरल का डिबेट यहाँ पे खत्म हो जाता है. और शायद इसीलिए आज हम ना रू अर्बन और क्या कहते हैं रूरल अर्बन फ्रिंज और पेरी अर्बन पे लोग बहुत बात कर रहे हैं. But I again have a question. Why do you want to define? Leave it like that. Why can't we just have ribbons of urbanization, you know, which Brian Berry was talking of, and which I say is like beaded urbanization. Now, why do I say beaded urbanization? I say that beaded urbanization because why do I need to see urban areas only as growth centers? Again we go to the growth pole theory, you know, where we talk of Peru and all the even somewhere Rostow when he talks of stages of growth. We don't need to go there. We simply need to see our city as a place, as a settlement which has certain benefits which other settlements don't have. And I don't need to have a proper you know, like a demarcation that okay, this is there. Why? Because as I've written here, as urbanization grows, demand for non-food grains rises rapidly. So I can't grow, you know, vegetables and lentils in city. I need my hinterland. I need the adjoining area, rural area, which will supply me with these supplies. Because when the population is increasing, you may say again, ma'am, aapne yahan pe likha peri-urban. No, I have written importance of peri-urban, but I have the problem with the concept of peri-urban. Why to say peri-urban? Why can't it be just, you know, a corridor of development or a corridor of urbanization, which was the term which, you know, was used as by Patrick Geddes as conurbation. But conurbation हो जाता कि 250-300 किलोमीटर. भाई मैं एक डेवलप्ड कंट्री नहीं हूँ, मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, मैं एक डेवलपिंग नेशन हूँ, तो मेरे पास मेरे रिसोर्सेज कम है, तो मेरे पास 250 किलोमीटर दूर का रेंज का अर्बन कॉरिडोर नहीं हो सकता. मेरा अर्बन कॉरिडोर मैक्सिमम 50 किलोमीटर का हो सकता है.
तो मुझे मैं उसको कोई और नाम दे सकते। क्यों? जब आप पेरी अर्बन कह रहे हो तो नेचुरली जो एरिया मेरा हिंटरलैंड है वो उस मतलब अगेन दिस इज अ साइकी। अच्छा ये अर्बन है तो मुझे ये पेरी अर्बन कह रहे तो मतलब मैं शहर का पार्ट नहीं हूं, तो क्या मैं शहर में अपनी सप्लाई दूं या नहीं दूं? Number of things can come to mind. So what I'm trying to say is that when we see this is what India looks like, you know. See, you have tall buildings over there, and then we also have these. I think this is a photograph of Calcutta, if I'm not wrong, because I can actually relate ये जो ऐसे जो झोपड़पट्टी की जो ये है ये कैलकाटा में visible है. So I think I've taken this photograph of Calcutta, right? So what I'm trying to say is that every time what is good to look at, you know, what seems to be the best. We have to come to you know, this thing that yes, we have a growth rate, we have a huge urban population, cities have to look after that population, but how do we do that? Why? Because this is what disparity is happening. You see, it's concentrated in one particular, पूरा साउथ जो है वो concentrated है. अब देखिए पूरा जिसको एक टाइम पे बीमारू स्टेट्स कहा जाता था, अब तो वो टर्मिनोलॉजी यूज नहीं होती. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, आपका क्या कहते हैं, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पे तो बड़ा शहर मुझे कोई एक रेड डॉट दिख ही नहीं रहा. रेड के छोटा वाला रेड भी आप देखो नहीं दिख रहा है. 2031 मतलब आज से 10 साल बाद भी एक बड़ा शहर 5 से 10 मिलियन का नहीं दिख रहा. बट अगर ऐसा है तो क्या हो रहा है? लोग नेचुरली बड़े शहरों की तरफ जाएंगे, और जब वो जाएंगे cities will not be able to cope, and when this will not happen, it will lead to large number of problems. And see, this is where we are different. ऊपर जो है लंदन पिछले 100 सालों में कैसा बदला है, तो आप देखो, ये देखो आपको दिख रहा है अटलांटा की स्काईलाइन. देखो ये देखो, अब आप देखो ये आपको, आप अटलांटा को अगर 89 की स्काईलाइन देख रहे हो, आपको इंडस्ट्री, आपको चिमनी का धुआं दिख रहा है. And which actually, you know, gives you the मतलब एग्जाम्पल जो मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारी अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बेस नहीं. आप देखो ये मैंने कैलकाटा की 1911 की फोटो लगाई है, कहीं पे भी कोई इंडस्ट्री नहीं दिख रही. और जब इंटरेस्टिंगली मैं जब दिल्ली की 1911 की फोटो देख रही थी, बार बार मुझे दिल्ली दरबार दिख रहा था, क्योंकि 1911 में हमें मालूम है कि कलकत्ता से कैपिटल शिफ्ट होके ब्रिटिशर्स ने दिल्ली में लगाया. तो दिल्ली की मुझे 1911 की कोई भी फोटोग्राफ नहीं दिखी जो मुझे सिटी का एक लुक देती, बट ये मुझे कलकत्ता की फोटोग्राफ दिखी. तो अब देखो कलकत्ता की फोटोग्राफ जहाँ में ट्राम और वो सब दिख रहा है बहुत डिफरेंट है, बट आप देखो आपको लंदन में या अटलांटा में आप बोलोगे बहुत डिफरेंस दिख रहा है, बट कलकत्ता से जो चेंज हुआ है, जो घरों का जो पूरा मॉर्फोलॉजी, जो सिटी का मॉर्फोलॉजी चेंज हुआ, बहुत डिफरेंट है देन जो हमें अटलांटा में दिख रहा है. उसका रीजन बहुत बड़ा वही है जो मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि हमारी पूरी प्रोसेस ही अलग है, हमारे फैक्टर्स ही अलग है, हमारे कॉजेस ही अलग है. और क्यों बड़े शहर इंपॉर्टेंट है, अब ये देखो ये ग्राफ फिर दिखा रहा है कैसे मिलियन प्लस सिटीज बड़ी हैं. क्यों? बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इज क्लस्टर्ड और सेंटर्ड अराउंड 3 क्लस्टर्स, राइट? एंड दिस वे these cities have the largest share in production as well as employment. But there's again a but their share is stagnating. Why? Because agglomeration which is occurring now, you see when you see this map of 2011 and even of you know, for Delhi and for Bombay, you see there are small circles in between. एग्लोमरेशन इकोनॉमीज होने के कारण अब उसके आसपास के शहर बढ़ रहे हैं. और आप मुंबई और दिल्ली इसका सबसे अच्छा एग्जांपल. आप देखो दिल्ली के पास गुड़गांव, नोएडा एंड कुछ हद तक फरीदाबाद, ये शहर अलग बढ़ गए हैं, अलग उनकी आइडेंटिटी है. दे आर मिलियन प्लस सिटीज, दे आर नॉट मेगा सिटीज. सिमिलरली मुंबई के पास पुणे. So agglomerations have, or agglomeration of these cities have actually given something. Migration will rise, no doubt, but we have to maintain that there are strong urban linkages with rural areas. And why is that? Because the reason is Indian cities are one of the cheapest cities in the world, right? You see here I've got this data, 129th पे है दिल्ली, 130th पे मुंबई. बट अगर हम ये कह रहे हैं तो हमें क्या सोचना है भाई? मैं कुछ क्वेश्चन पोज करूंगी, मतलब मैं कुछ कह कर तो नहीं अपना वो क्या कहते हैं, आई कैन जस्ट लीव लाइक दैट. हु इज इन चार्ज ऑफ इंडियन सिटीज?
अगर हम सिटीज की बात करें, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस है, अर्बन लोकल बॉडीज है, 74th अमेंडमेंट एक्ट कहता है कि अर्बन लोकल बॉडीज होंगी, बट क्या वो अर्बन लोकल बॉडीज इतनी स्ट्रांग है कि दे आर चार्ज ऑफ इंडियन सिटीज? नो। सिटीज हैव ह्यूज इन्वेस्टमेंट नीड्स, तो वो कहां से फुलफिल होंगे? हमने 5 ईयर प्लान खत्म कर दिए, क्या मास्टर प्लान उसके बारे में बात करते हैं? रेवेन्यू सोर्सेज आर वीक, क्योंकि अगेन हमारी सिटीज में इनफॉर्मल इकोनॉमी बहुत है। तो भाई जब आप इनफॉर्मल इकोनॉमी के पार्ट है तो आप टैक्स भी नहीं पे करेंगे, तो जब आप टैक्स नहीं पे करेंगे तो रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा? डिसीजन मेकिंग होराइजन इज टू शॉर्ट। हम प्लानिंग करना चाहते हैं बहुत कम टाइम की या बहुत छोटे एरिया की, और इसका सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको दूं, मैंने एक काम किया था अभी विद माय पीएचडी स्टूडेंट्स ऑन स्मार्ट सिटी, दिल्ली एज अ स्मार्ट सिटी। तो हमने पेपर लिखा और we were astonished to read that the entire city of Delhi is not smart city. सिर्फ एक सिटी सेंटर है दिल्ली का जो कनाट प्लेस के 10 स्क्वायर किलोमीटर का अंदर का एरिया है, that has been which is part of Lutyens Delhi, और वो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल का पार्ट है जो सबसे रिच है, और वहां पे कौन रहते हैं? हम सब जानते हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और नेता। वही सिर्फ स्मार्ट सिटी के प्लान में आता है। अब बताइए ये इसको आप क्या कहेंगे? भाई आपने बता दिया, सब पढ़ रहे हैं, अरे क्या दिल्ली स्मार्ट सिटी बन रही है? क्वेश्चन है इस पे हम सिक्योरिटी पे काम कर रहे थे, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे, तो हमने लोगों से पूछा अच्छा आपको पता दिल्ली? अरे हाँ हाँ हमें मालूम है दिल्ली स्मार्ट सिटी है। अच्छा आपको पता है दिल्ली स्मार्ट सिटी है? कौन सा? अरे पूरी दिल्ली स्मार्ट सिटी है। एंड व्हेन वी सॉ द प्लान व्हिच इज अवेलेबल, आप भी अगर आप जाएंगे स्मार्ट सिटी प्लान पे, आप जाकर उसको खोलकर देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है एनडीएमसी दिल्ली, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, इट्स नॉट इवन कॉर्पोरेशन, राइट? Yeah. So what do I say? These metro cities are important. They are breaking Western, they are breaking myths of Western urbanization, but we should still have hope because we are still developing. Why? Because our biggest asset is dream of our people against all odds. And see, this picture says, in spite of living in that, place which they call home, the mother is getting the child ready for school. So they have hope कि city हमें कुछ देगी. So the right to city is far more than the individual liberty to access urban resources. It is right to change ourselves by changing the city. So it is my right, to be in the city because I want to change my life. I want to change the way I, want my life to be. And this I got beautiful line on, cities of India. In India, I found a race of mortals living upon the earth, but not adhering to it, inhabiting cities, but not being fixed to them, possessing everything, but possessed by nothing. Why? Because here in India, we don't, follow urbanism as a way of life. We are just urban dwellers. There's very, very few, a very small percentage of population which says that, they're living that life, which is called urbanism. We are urban dwellers. We just want a city to give us something. We have hope for our city. We don't have that, that thing that I'm an urbane. We don't go into that. Thank you. Thank you so much. Thank you, Taruna. It was a wonderful lecture. You started with the definition of urbanization, and I remember certain things that we also studied when I was doing my PhD, that industrialization and urbanization, they are so perfectly married in the West, but they are divorced in the East. That was there in my thesis also, because we don't have both of them going hand in hand. That is one part. You also went on to quote Amitabh Kundu sir, and you said that it's top heavy, very rightly so. We have very skewed urbanization in India. Only the class 1 cities are having the majority of the population. And when you ended on a very nice and positive note. So, Taruna, I just have a small, not a query as such. I just like to add on to it. I just want, yeah. अभी घर पे थी नहीं तो ये थोड़ी घर से Yeah. Ankita, can you please mute yourself? Sorry. Yeah, Ankita. So, Taruna, what is your take on what we noticed last year when there was a large-scale migration from the big cities
Mainly the informal sector dwellers, they went from big cities towards back to their villages. And will we get to see, according, because you are working on urbanization and you've done a lot. So I just want your views on what do we foresee now that there has been a migration, there has been a reverse migration towards the villages, and that is quite evident in Jharkhand. Because now when I go about in the villages of Jharkhand, I can see people who have come back from big cities. Just after the lockdown, when I went to the field, I found out that many people had migrated from the big cities. So will we see something different in the coming days? Because the class 6, class 5 cities are decaying. And we have seen many dead cities in the mining region. They have been declassified as census towns in the coal belt. So what is your take on this with the COVID situation? Can you just throw some light before I open it up for the others? I always say this, that cities are places of hope. So, and whatever we say, whatever we do, one thing is sure, that we do need people from our hinterland, so that the entire system, the city system works, because it is like a system. It's not, city doesn't work independently or in isolation. So I'm sure this is just one pandemic which has occurred. It is something which the nature has retaliated, Mother Earth has given us, because we have become inhuman. And we all hear that cities are concrete jungles, which I also said when I was talking about. But some way the entire world is moving towards urbanization, and we have technology as the biggest asset. So I think somewhere we will come back, although maybe the proportion will be different. People are working from home, but working from home can only occur for a particular sector. Not for, we can't construct our houses working from home. So I think people will come back, because city has its own charms. So वो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि दिल्ली के लिए कहा गया ये शहर नहीं, ये महफिल है, और हर कोई उस महफिल का पार्ट होना चाहता है. So people will come. It's just a time of a transition, because this is not by human community which has been put forward. It has been a retaliation from the environment, from the mother nature. So it will take its time. It will take next 4 years or 5 years. But as I said, cities grow. They cease to exist. And you said that in Jharkhand there are certain cities which have been declassified. Now see, this is again policy matter: classification, reclassification, declassification. When you are not generating enough revenues, because mining has been like banned in number of places. और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि झरिया में इतना ज्यादा कोल माइन किया गया कि the city can like just sink in. So again, we are being inhuman to the mother nature. उसने हमें कोल दिया, इसलिए नहीं दिया कि हम सारा का सारा नीचे से उसको खाली कर दें. तो कहीं ना कहीं I think it's just the process which is in transition. So कहीं पे urbanization बहुत ज्यादा, कोई भी एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जा रही है, तो मदर नेचर रिटेलिएट कर रही है. और ये जहां तक डेड सिटीज की बात है, तो ये आफ्टर सम टाइम कहीं कोई ना कोई एक्टिविटी वहां जरूर आ जाएगी जो अपने आप को रिवाइव कर देगी. क्योंकि अब हम वो रोमन एम्पायर वाले टाइम पे नहीं है कि रोम खत्म हो गया तो रोम खत्म हो गया, and things have like the city has ceased to exist. It's my own belief, and I have this hope that all the cities which have been designated as cities, they have that spirit. वो एक अगर बीज भी बचा हुआ है वो दोबारा ग्रो कर लेगी. It's just a matter of time. Okay, thank you so much. Now I leave it to the house, please. Thank you, ma'am. It was very nice presentation, and we have learned so much things. Ma'am, मुझे एक question पूछना है. Sure, please. Yeah. Myself, Arpana Orao from Department of Geography, Nirmala College. In presentation, every country has its own process of urbanization. We are having rapid urbanization in India.
So is there any need of change in occupation or functions in urban areas? See, we can't change the occupation because, as Professor Muniz Raza from CSRD, he used to say that our entire economy is not like the one which was in the Western world. वहाँ पे क्या वो जो shift हुआ वो primary से secondary हुआ, secondary से tertiary हुआ. हमारा क्या हो गया? Our economy, he used to cite this example. Our economy is like that of a dinosaur. सर छोटा है तो एग्रीकल्चर बहुत छोटा है, देन वी हैव द इंडस्ट्री, और पेट बहुत बड़ा है, दैट इज द टर्शियरी सेक्टर. और अभी क्या हुआ है, हमारा पूरा जो इंडस्ट्रियल अर्बनाइजेशन है वो पूरा का पूरा टर्शियरी सेक्टर बेस्ड है. बट अगर बात प्रॉब्लम क्या है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को अब वहां पे रूट्स भी नहीं दे सकते, क्योंकि द नेचर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज चेंज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड. पहले क्या था कि एक इंडस्ट्री थी तो लोगों ने वहीं पे पूरा कोई भी कॉमोडिटी जो बन रही है, कार अगर मैन्युफैक्चर हो रही है तो उसी प्लांट में हो रही है. बट आज वो नहीं हो रहा. आज आपने क्या किया, आपने वो कंज्यूमर बेल्ट वाली टेक्नोलॉजी बनाई है कि हर एक जगह पे एक एक पार्ट हो रहा है एंड देन यू असेंबल, राइट. सो आज हमारी इंडस्ट्री का जो नेचर है वो भी चेंज हो गया और वो हमारी सिटी में नहीं आ सकता. इसीलिए आप देखो कि जितने भी इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं वो सारे के सारे पेरिफेरी में लगाए जा रहे हैं. तो हम नेचर नहीं चेंज कर सकते ऑक्यूपेशन का, बिकॉज हम ऑलरेडी उस रोड पे चल चुके हैं जहां पे टर्शियरी सेक्टर इज द वन विच इज लीडिंग द वे, क्योंकि हमारा जीडीपी जो है वो पूरा सर्विसेज से आ रहा है. बट हाँ, हम अपने शहर को और ज्यादा ह्यूमेन बना सकते हैं और ज्यादा इंक्लूसिव बना सकते हैं. जो हम न्यू अर्बनिज्म की जो अगर आप पॉलिसीज देखेंगी या जो इवन स्मार्ट सिटी करना चाह रही, हम टेक्नोलॉजिकली अपने सिटी को और इंक्लूसिव बना के डेवलपमेंट के पाथ पे लेके जा सकते हैं. तो आई थिंक जो चेंज चाहिए वो सिटी प्लानिंग में चाहिए, सिटी डिजाइन में चाहिए, रादर देन सिटी ऑक्यूपेशन. Thank you. Thank you. Any question from student side? We'll be waiting for the students to type in their queries on the chat box. Meanwhile, ma'am, thank you so much for this erudite session. I'm from Department of Economics, Dr. Sukanya. I extend my wholehearted thanks to you for being a resource person for the day. It was a wonderful session in the sense that urbanization is also a part of our curriculum. And it was great to learn a lot from your perspective. Ma'am, my question is that most of the cities in India, whether they are A, B, or C grade cities, are expanding and without much infrastructural or let me put it this way, that without much planning, and they're just expanding, most of the cities, and at what cost? So I would like you to just tell us about the dichotomy, especially when it comes to environmental depletion, degradation, and the cost at which our cities are expanding. We are doing away with most of the fertile lands in and around the cities just to expand and accommodate more population. And it's a very sorrowful state to see that cities are not planning out their their growth and expansion in whichsoever manner they are doing so. So how can we balance this resource depletion and economic infrastructural growth along with the development of the cities, because we know that development is important, and yet at what cost? Yeah, right. So I'll just answer it in like in 2-3 stages. One, see, the thing is the whole thing comes to development for whom? When we say what you said at the last, the development for whom and at what cost. But my thing is when we are in a urban area, suppose I have migrated, anybody, I'm a migrant to Delhi, do I accept the city as my home? No, we don't. So the problem starts is it has always been said, Mother Teresa said that charity begins at home. So when I want to get all the benefit from the space. I want all the rights, but I don't want any responsibilities, or I don't want to do any duty.
So any migrant or anybody, चाहे वो कितना करोड़पति हो और चाहे वो कितना गरीब हो, क्या वो सिटी को अपना घर मानता है? नहीं मानता। वो खुद ही वो उसको इम्बाइब नहीं करता, तो अर्बनिज्म वे ऑफ लाइफ बनेगा ही नहीं। तो जब मैंने उस सिटी को लिया ही नहीं, तो मैं उसकी डेवलपमेंट के बारे में सोचूंगी नहीं। और दूसरा प्रॉब्लम एज इंडियंस, जो मैंने कैलकाटा या दिल्ली में रहकर, या जो जब मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ या कलीग्स के साथ इंटरैक्ट कर रही हूँ, वो ये है कि हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्लानिंग की है। हमने 5 ईयर प्लान्स बनाए, हमने 1 ईयर प्लान बनाए, बट हमारे जो मास्टर प्लान्स हैं, दे आर नॉट लाइक गोइंग अलोंग विद दोस 5 ईयर प्लान्स। हमने स्मॉल एंड मीडियम टाउन्स, ये आपका जो एक पॉलिसी बनाई, वो आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम टाउन्स, राइट? बट none of the document actually defines small and medium towns. When we work on it, we define अच्छा class 2, 3 जो है वो medium होंगे और 4, 5, 6 जो है वो स्मॉल होंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी डेफिनेशनल प्रॉब्लम भी है, जो मैंने आपको बोला अभी भी कि आपने बोला 5000 पॉपुलेशन, बट मेरे यहाँ तो आपकी हमारी एज अ होल इंडिया में पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। तो विलेजेस जो हैं, विलेजेस भी तो 5000 से ज्यादा के हैं, बट बिकॉज वो अर्बन इसलिए नहीं है बिकॉज वहां पे एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन, राइट? और मेरा जो अपना टेक है वो सारा यही है कि हमने अपने आप को जो ये जो डेफिनेशनल डाइकोटमी में जोड़ा हुआ है ना, कि हम अर्बन हैं और हम रूरल हैं, और जिसका कारण ये है कि रू अर्बन और अर्बन रूरल फ्रिंज और पेरी अर्बन, दैट हैज टू बी समवेयर मर्ज्ड। क्योंकि तब जब हमारा हिंटरलैंड अपना होगा, आप देखिए जब हम पोर्ट की बात करते हैं, पोर्ट के साथ हम हमेशा हिंटरलैंड पढ़ते हैं कि भाई पोर्ट तभी सरवाइव कर सकता है जब उसका हिंटरलैंड उसको रिसोर्सेज देगा, बट हम सिटी के साथ नहीं कह सकते। जो मैंने अभी भी जब डॉक्टर देवजानी ने कहा, तो मैंने कहा cities can't grow in isolation. So somewhere we have to come up, we as researchers or we as the urban people have to come up with ideas, we have to come up with policies where we integrate urban and rural. As I said, the linkages have to be diluted, sorry, the dichotomies have to be diluted and linkages have to be strengthened, so that this entire thing becomes a corridor type of thing, so that there is no alienation, and I think that is one way where I was saying that I've come up with this idea. I don't know how can I put it forward, but then I was one of my student work, I said it has to be like beads of urbanization, beads of growth. Reason, when you have towns at lesser distance, maybe 20 kilometer, 25, agar aap jaise when you go from Delhi to Chandigarh, most of the towns are 50-60 kilometers, Panipat, Sonipat, Ambala. अब आप इसमें जो आप देख रहे हो, तो यहाँ पे डेवलपमेंट, अर्बनाइज्ड डेवलपमेंट होना बहुत आसान है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि एक्सपेंशन होगा रूरल एरिया, बट वी कैन ऑलवेज लिमिट दैट, भैया जो एक्सपेंशन होगा वो सिर्फ 1 किलोमीटर तक ही होगा, उसके बाद हम रूरल एरियाज को नहीं टच करेंगे। Ma'am, I would like to ask you here, what is, how to limit, like आप अगर बड़े-बड़े शहरों को देखेंगे, there are 2 ways in which they are developing. Either the migrant laborers are coming and opening up slums, or the big townships are coming. Like आप Delhi area में देखिएगा, Delhi to Meerut, that highway which is now coming up, तो उसमें आप या तो Delhi to Agra, उसमें huge townships are coming up. तो एक बहुत बड़ा एक gap हो रहा है, या तो slums है या तो huge townships which people are buying. यही कहाँ लिमिट होगा? लिमिट मेरा कहने का मतलब है, जैसे हम जो हाईवेज बना रहे हैं, हाईवे से आप देखिए, आपने 1 किलोमीटर तक का वो रेंज बना दिया कि इतना, इससे दूर आप नहीं जाएंगे। तो जब आप लैंड सेल कर रहे हैं, तो आपका 1 किलोमीटर तक ही आपका सिटी लिमिट हो सकता है, उसके बाद आपने उसका रूरल कैरेक्टर रखना है, क्योंकि अगर मेरा हिंटरलैंड नहीं है, तब फिर मुझे रिसोर्सेज भी तो नहीं मिलेंगे। अभी जो हम सोच रहे हैं, हम ये सोच ही नहीं रहे कि अरे मैंने अगर पूरा शहर कर दिया, शहरीकरण कर दिया, तो फिर मुझे सब्जियां कहाँ से मिलेंगी? फिर उतना तो मेरा कॉस्ट भी बढ़ेगा ना, भाई मेरे पास सब्जियां उगाने के लिए जगह ही नहीं है, शहर में तो मैं उगाऊंगी नहीं, तो मुझे फिर जो मेरा मिल्क प्रोडक्शन कहाँ से आएगा, मेरा एग्स या मेरा पोल्ट्री प्रोडक्शन कहाँ से आएगा? तो आई थिंक ये सारा एज एन इंडिविजुअल हमें सोचना पड़ेगा, और तब शायद वी कैन कम अप विद सम सॉल्यूशन। So you mean to say that with urbanization there has to be integrated rural development? Yes, exactly. It has to. We can't make rural society and urban society for making it a better place. We have to keep the rural essence alive. Yeah. Yet develop it. Yes, it has to be balanced. Yes. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you, my pleasure.
I think I have a question here in the chat. Yes, ma'am. Yeah, this is Sonal. Is that should we follow the Western urbanization techniques? See, we don't need to follow anything. You know, what I'm trying to say here is we always learn from history. So we should keep on learning from it. But we know our experiences are different. So after learning, we can always, you know, come up with a new thing. Maybe you have never heard anybody questioning that there is something called a Western urbanization, which we are not following. But I, after studying so many years, I am ready to question it. So, you know, it's just that we learn and then we come up with something new. Right, Sonal? So next, I think, I don't know, there's another question. You said that here causes and factors are different. So could we be able to develop that type of like, no, we can't. American urbanization is again something with Western urbanization. See, we don't study American urbanization as such. We study as the Western urbanization, which includes the developed world. So even the urbanization which has occurred in Japan comes under Western urbanization. And when I was giving the definitions of urban, you see, Japan says it's 50,000 plus population. So we are studying developed, the urbanization which has occurred in developed countries and the countries which are developing. So the debate is here, development is the criteria. It's not the continent is not the criteria. The scale is of development. So we have this north and south thing. We have the developing world. First, it used to be more developed countries and the south, less developed countries. Now, or the third world countries. Now we have the developed countries and the developing countries. So the scale is basically development, right? And Western क्यों different है बहुत ज़्यादा, because पूरी history उनकी different है. जो मैंने आपको शुरू ही उससे किया ना, आप जब वो ग्राफ देखेंगे, अगर आप जो ग्राफ है अर्बनाइजेशन का, तो आप अर्बनाइजेशन की वहां पे देखिए ना, वहां पे प्लेटो पे पहुंच चुकी है. और सबसे बड़ी बात है, उनकी अर्बनाइजेशन हमसे 150 साल पहले शुरू हुई है. अब आप इसमें मुझसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैम मोहनजोदारो भी तो शहर था. मोहनजोदारो था तो उनके पास तो रोम भी था. हम तो आज की अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं ना. तो आज की जो अर्बनाइजेशन है, उनकी अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बेस्ड है. हमारी अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बेस्ड नहीं थी, क्योंकि हमारे जब हमें इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, और जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान आए, तो उसमें ये कहा गया, कि जो इंडस्ट्रियल टाउन्स बनेंगे वो बनेंगे, वही अर्बनाइजेशन की पिलर्स बनेंगे. बट आप देखो, जितने भी इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, आपका बोकारो, भिलाई, ये तो बहुत बड़े शहर नहीं बनकर आए. तो इसका मतलब क्या, कि कहीं ना कहीं 50s में ही हमने ये तय कर लिया कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बेस होकर हमारा अर्बनाइजेशन नहीं है. ये अंकिता, why south part is more, no, it's not developed. I didn't say it's developed, dear. I said it has more urbanization. Most of the smart cities are not planned efficiently and practically. Why most of them have not, even after spending huge sum of money. See, again the problem is, जो मैंने अभी मैम को जो इकोनॉमिक्स वाली मैम थी उनको मैंने जो कहा, the thing is, you know, सबसे बड़ी बात है, हम अपने आप को ही अर्बन नहीं मान रहे ना. भाई स्मार्ट सिटी है, आप मुझे बताओ, अगर रांची को स्मार्ट सिटी कहा गया है, तो जो उससे कहा गया, हम कितने टैक्स पे करते, कितने, मैंने तो दिल्ली में देखा है लोगों को, जामिया जाते हुए लोगों को देखा है, वहां पे रिक्शा स्टैंड के लिए अलग जगह बनाई हुई है. बट लोग फिर भी, रिक्शा वाले जो हैं, रिक्शा वाले स्टैंड में नहीं खड़े होकर बाहर रोड पे अपनी रिक्शा खड़ी कर रहे हैं, और लोग उन्हीं से ही रिक्शा ले रहे हैं. क्यों? तो स्मार्ट सिटी का मतलब तो स्मार्ट पीपल भी है ना बेटा. स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, बट स्मार्ट पीपल भी तो है ना. तो आर वी स्मार्ट इनफ दैट वी आर, तो क्योंकि हमेशा गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना जरूरी नहीं होता. जो अर्बन लोकल बॉडीज की बात है, वो बार बार वही कह रहे हैं ना कि भाई आप पीपल पार्टिसिपेशन की भी बात करें. तो हम एज अर्बन ड्वेलर्स कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. I have a question. What will be the biggest challenge in the future as population rapid? So what will it? जो मैंने अभी मैम को कहा ना कि see the thing is future of urbanization biggest challenge तो सबसे बड़ा यही है कि urban environment को हम कितना सही रख सकते हैं, ताकि cities जो राजीव गांधी 1980s में बोलकर गए हैं कि कैलकाटा इज डाइंग सिटी, या जैसे अभी देवजानी मैम ने बोला कि वी हैव डेड सिटीज इन झारखंड, ये स्टेटमेंट्स नहीं आए. Cities should not cease to exist. Cities have hope for the population which is migrating to that urban settlement, hope for the people who are living there. But then as urban dwellers, we need to have that thing in us that this is my city, ये मेरा शहर है,
ये महफिल है बट ये मेरी महफिल है। तो जब मैं ये चीज एक्सेप्ट कर लूंगी और मैं ये मान लूंगी कि भैया मुझे रूरल एरिया की भी उतनी जरूरत है क्योंकि मेरी रिसोर्सेज वहां से आ रही है। आप रूरल नहीं बोलिए ना, आप उसको हिंटरलैंड बोलिए, रिसोर्स रीजन बोलिए। अगर आपको रूरल बोलने में प्रॉब्लम है आप टर्मिनोलॉजी चेंज कर लीजिए, बट आप आइसोलेशन में नहीं डेवलप कर सकते। और जो प्रोफेसर कुंडू बोलकर जा रहे हैं, जो उन्होंने पूरा इतने सालों बोला टॉप हैवी अर्बनाइजेशन, उसका कारण ही यही है कि हमने अपने शहरों को आइसोलेट कर दिया। जी ज्योग्राफिकल कंडीशन तो नेचुरली डिपेंड करेगा इंडियन अर्बनाइजेशन पे, क्योंकि जहां पे फ्लैट लैंड है, जो फर्टाइल प्लेन है, वहां पे आपको बड़ा शहर दिखेगा। अब कैलकाटा जो है वो हुगली के एक दूसरी तरफ तो नहीं उसकी ग्रोथ नहीं है ना, या जो बॉम्बे है वो सी में, तो हम नहीं सी को रिक्लेम नहीं कर रहे ना, उसका डेवलपमेंट नॉर्थ एंड साउथ है। बट दिल्ली जो है वो एक मोर और लेस सर्कुलर शेप में डेवलप हो रहा है। तो ज्योग्राफिकल कंडीशन तो बेस रहेगा। साइट एंड सिचुएशन जब हम पढ़ते हैं किसी भी सेटलमेंट का, तो वो तो एक प्राइम फैक्टर रहेगा ही ना बेटा, वो रहेगा ही रहेगा। बट मेन जो है हमें जो समझना ये होगा कि हम आइसोलेशन में ग्रो नहीं कर सकते। तो कोई भी मेरी पॉलिसी, चाहे वो स्मार्ट सिटी की पॉलिसी हो, चाहे वो कोई भी प्लानिंग हो, चाहे वो मास्टर प्लान क्यों नहीं हो, आपको रूरल बोलने में तकलीफ है, आपको पेरी अर्बन बोलने में तकलीफ है, तो रिसोर्स टर्मिनोलॉजी कैन बी चेंज। उसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल देखिए ना, जो आप मॉल में जब आप जाते हैं, और इसका तो बहुत सारा कार्टून भी बना हुआ है कि अगर प्राइस रखा हुआ, बाटा के सारे प्राइसेस 99 है, तो आपको लगता है अच्छा 1000 नहीं है, तो आप उस सामान को खरीद ले रहे हैं। 999 चलेगा, 299 चलेगा, 399 चलेगा, बट यही अगर 400 हो गया नहीं चलेगा। तो भैया आप रूरल हटा दो, आप उसको रिसोर्स रीजन कर दो। सुनने में भी अच्छा लग रहा है, मेरा रिसोर्स यहाँ से आ रहा है, देने वाले को भी अच्छा लग रहा है, अच्छा मैं रिसोर्स दे रहा हूँ। So it's a win-win situation. So it all depends on how you will perceive it. Everything is in our mind. Everything is in our mind. तो अगर मुझे लग रहा है कि यार मैं दे रहा हूँ, अब आप सोचो किसी आप गांव वाले को जाके बोलोगे अरे भैया मेरा शहर तेरे कारण है, तू रिसोर्स प्रोवाइड करेगा तभी मेरे को खाने को मिलेगा। अब सोचो जो गांव से नई शहर में सब्जियां आ जाए, तो दैट हैज टू, वो पूरा परसेप्शन बिल्ड करने की जरूरत है। दैट इज व्हाट आई फील, दैट्स माय टेक। थैंक यू। Yes. Thank you, Taruna, once again. And you have answered the queries. We don't have any more queries. Thank So you, I would now request Sister Suman from the Department of Geography to please propose the vote of thanks. Thank you, ma'am. Good afternoon to all. I, Sister Suman from the Department of Geography, take this opportunity to propose vote of thanks to all who witnessed this informative and knowledge-enhancing lecture. My first and foremost sincere thanks goes to our esteemed resource person, Dr. Taruna Bansal, Associate Professor, Jamia Milia, Islamia, New Delhi. Thank you, ma'am, for sparing your valuable and precious time and delivering your lecture on a very relevant topic. You simplified the lecture so that maximum students could benefit from it. As I said earlier, it was an informative and knowledge-enhancing lecture. Thank you, ma'am, for empowering our students through your lecture. Now, I would like to extend and express my heartfelt thanks to our Chief Patron and Principal, Dr. Sister Jyoti, for her valuable guidance and support. We have always experienced your support and encouragement, Sister. You have always accompanied us in growth journey of our department. Thank you, Sister. I thank our GB Secretary and Superior, Sister Sushma Bek, and our Vice Principal, Sister Shobha, for their encouragement and support. I sincerely thank our HOD, Dr. D. Roy, for taking keen interest and arranging this event, Sister Priscilla Memorial Lecture. Thank you, ma'am, so much for your cooperation. My deep appreciation and gratitude to all the faculty members of Geography Department, Mrs. Jyotsna, Dr. Parveen Jara, Dr. Sanvita Saiwalini, Dr. Atna Lina,
for their hard work, cooperation, and contribution towards this event. I thank all the faculty members of Nirmala College for being present with us and being the part of this event. My sincere thanks to Dr. Sukanya and Mrs. Prachi for all their help and support that they rendered to us. I thank all our students who participated in this lecture and have gained knowledge much. Thank you, dear students. Without you, this event would not have been successful. I extend my gratitude towards Mrs. Poonam, Mr. Santosh, Mr. Sanjeev, and all other supportive staffs of our college for their help and assistance. Thanks to everyone. May God bless us all. Thank you, ma'am. Thank you so much. It's my privilege to be here, and I'm sure whenever I come to Ranchi, I'll surely I'll make sure that I meet all of you there. Thank you so much. Yes, Taruna, we want to have you in our campus. Yeah, Let me sure. assure you, we have a beautiful campus. You were here last year in 2019 for a little while, and but I didn't have a chance to invite you here next time, surely. Thank you so much once again for your precious time. Thank you. Thank you. Pleasure is all mine. We really feel, great after listening to you. So thank you so much. May I now end the meeting? Yeah, sure. Thank you. Thank you. Thank you, everyone present here. Thank you so much.